Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 69 for that topic, sexual reproduction in angiosperms. Now we have been learning regarding the structure of ovule. That ovule is also called as Megasporogenesis, you know. And ovule, where it is produced? Inside the ovary of carpel of that gynoecium. फ्लावर में जो innermost floral wall होता है उसे कहते हैं gynoecium. The member of the gynoecium is called as carpel. और carpel का जो basal swollen part होता है that is known as the ovary. That single ovary may contain one or many ovules. And the ovule, we have said, they are considered as the egg producing organ. क्योंकि एनिमल के जैसे यहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है तो फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ वन फीमेल गैमेट इज इसेंशियल एंड दैट फीमेल गैमेट इज एग. तो एग कहाँ पे प्रोड्यूस होता है फ्लावर में? दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम. ओके, तो वो एग कैसा बनता है, दैट स्टोरी वी हैव टू लर्न हियर. इन द लास्ट वीडियो इफ यू विल गो देयर, वी हैव स्टडीड the structure of ovule or megasporogenesis in much detail. तो वहां पे हमने देखा था that ovule is mostly anatropous. Anatropous का मतलब क्या होता है? Inverted. The ovule is attached to the placenta of the ovary by the stalk known as the funicle. और funicle एक end हो गया, that particular end to which is the that basal end of that ovule will be known as the chalaza. और ये यहाँ पे बेंड हो गया है ऐसा. तो बेंड होके ऊपर ही, यानी ऊपर जो होना चाहिए था माइक्रोपाइल, वो ऐसा बेंड होके नीचे आया है. हम ऐसे पैर के यहाँ पे जब हाथ लेते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है वैसा. एंड दैट इज पर्टिकुलरली माइक्रोपाइल ओपनिंग. सो व्हेन माइक्रोपाइल एंड दैट chalaza and funicle all are not in straight line, but micropyle is facing downwards, it is known as anatropous ovule. तो ये anatropous ovule है, inverted ovule है, where micropyle is not facing up, facing down. okay? तो इस ovule के स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स मैंने बताए थे. One is the outer coverings called as the integuments. ये दो इंटेग्यूमेंट्स हम बता रहे हैं यहाँ पे. दिस इज वन इंटेग्यूमेंट, दिस इज अनदर. इंटेग्यूमेंट का मतलब ही होता है कवरिंग, एंड दैट प्रोटेक्ट्स वेरी वेल द इनर फ्लेशी फर्टाइल मास, एंड दैट इनर फ्लेशी फर्टाइल मास इज नोन एज व्हाट? न्यूसेलस. दैट न्यूसेलस इज ऑल फॉर्म्ड बाय द डिप्लॉइड सेल्स. ओके, तो पहले तो यंग कंडीशन में जब ओव्यूल है, at that time that entire mass is there nucellus, made up of large number of the diploid cells. But at the time of maturity, one of the diploid cell from that nucellus, one of the diploid cell of nucellus, ये जो nucellus है उसका एक diploid cell gets enlarged, activated, and acts as मेगास्पोर मदर सेल. उसको हम आगे चल के कहेंगे MMC, मेगास्पोर मदर सेल. ओके, सो दिस मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड, which is also abbreviated as MMC. ओके, उसको MMC कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल. And that undergoes meiosis division. ये meiosis division बहुत जरूरी होती है, so that ploidy level will get maintained at the end after the fertilization, and it forms the four haploid megaspores. 4 haploid cells are formed and they are known as megaspores. 4 megaspores यहाँ पे तैयार होते हैं. Okay, and that process is called as the Megasporogenesis. Out of that 3 get degenerated. 3 megaspores जो है get degenerated
टूवर्ड्स द चालाजल एंड. ओके, चालाजल एंड के तरफ के जो 3 है ऊपरी, दे गेट degenerated, only one remains active, and that only one active megaspore, only one active megaspore produces embryo sac or female gametophyte. That's why that फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक. एक ही स्पोर से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, और वो हम देख रहे हैं यहाँ पे. तो ये स्टोरी थोड़ी ध्यान में ले लो. इसको ही कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ वन डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इनटू द 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. तो देखो मैंने क्या बताया आपको, दैट ओव्यूल हैज गॉट 2 मास, पर्टिकुलरली 2 मेन फीचर्स देयर, 2 मेन स्ट्रक्चर देयर इन द स्ट्रक्चर. सेंट्रली प्लेस्ड डिप्लॉइड मास, fleshy and fertile, known as nucellus, enclosed in the coverings double, called as what? Integuments. Integuments do not cover that nucellus completely, leave a minute aperture at the end known as micropyle. Obviously that end is called the micropylar end. ये एक पोर यहाँ पे छिद्र होता है. ओके, एंड द अदर एंड इज नोन एज द चालाजल एंड. नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड, एमएमसी, उसे एमएमसी कहते हैं. इट इज डिप्लॉयड, इट अंडरगोज मियोसिस डिवीजन. सो हमें मालूम है एक मियोसिस डिवीजन में डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. Because that happens in 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2, you know. So 4 haploid megaspores will be formed there. Out of that 4 haploid megaspores, 3 get degenerated. 4 तो बनते हैं पर 4 में से 3 गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, ह्रास हो जाता है उनका, और एक ही खाली वहां पे बच जाता है. That single active megaspore which is left behind, वही अपने कुल का नाम रोशन करता है, एंड दैट इज दैट फर्स्ट सेल ऑफ दैट फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, तो ये मेगास्पोर जो है, हैप्लॉइड मेगास्पोर, ओनली वन एक्टिव हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, एंड सिंस इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओनली वन मेगास्पोर, इट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक. इस एम्ब्रियो सैक को मोनोस्पोरिक ऐसा कहते हैं. ओके, एक स्पोर से बनने वाला. अब ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसा बनता है उसकी स्टोरी हम अलग देखेंगे, बट एंड का जो रिजल्ट है वो हम देखेंगे यहाँ पे. द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी ये देखो, ये न्यूसेलस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बताया है जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा है, दैट स्ट्रक्चर इज फीमेल गैमेटोफाइट. दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, एंड इट इज पर्टिकुलरली फॉर्म बाय 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिया. उसकी खासियत है वो that this female gametophyte is 7-celled and 8 nucleated. हम हिसाब लगाएंगे कैसे है. 7 cells कौन से हैं? Out of that 7 cells, 3 cells are present towards chalazal end, known as antipodal cells. ये 3 antipodal cells है. Actually they are nutritive in function. Fertilization के बाद उनको वैसा रोल नहीं है. Probably they may be helping in nutrition. वो 3 antipodal cells. Then 3 cells are present towards micropylar end. They are very important. They are forming the egg apparatus. ये egg apparatus में जो 3 cells है, तीनों भी haploid है. And that egg is haploid, female gamete required for fertilization. Fertilization के लिए जो जरूरी है वो egg है, जो मेल गैमेट के साथ सिंगैमी यानी फर्टिलाइजेशन कर लेगा एंड जाइगोट बनाएगा. जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से प्लांट बन जाएगा. Isn't it? So that very important cell is this egg. And then 2 lateral cells are there called as the synergites. They are just acting as the assistant of that egg. ये egg यानी महारानी है समझो, अभी राजकुमारी है, तो उसके आजू बाजू में ये 2 उसके दासी जो है, जो उसके फ्रेंड्स है वो है. दे आर कॉल्ड द सिनर्जाइट्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ दैट
egg. Okay, they are helping in the process of fertilization. वो कैसे हम देखने वाले हैं. Then this is egg apparatus. 3 और 3 6 तो हो गए. Okay, and a single large cell is present in the middle, known as central canal, which is diploid because that is formed by 2 haploid nuclei. 2 haploid nuclei यहाँ पे दिख रहे हैं, and that's why this is diploid cell. Okay, and that is known as central cell or primary endosperm nucleus. ये सेल का भी इंपॉर्टेंस है. क्या है हम देखने वाले हैं. दैट इट आल्सो टेक्स पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन, पर वो प्लांट बनाने के लिए नहीं, रिजर्व फूड बनाने के लिए उसका यूज होता है. दैट डबल फर्टिलाइजेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर दैट, एंड इट प्रोड्यूसेस द नरिशिंग मास ऑफ द सीड नोन एज एंडोस्पर्म. दैट वी शैल लर्न. तो 7 सेल 8 न्यूक्लिया ध्यान में आए कैसे हो गए. 3 cells are present towards chalazal end called as antipodal cells. 3 cells are present towards the micropylar end called as the egg apparatus, and that a single cell is there in the middle known as central cell. So total हो गए 7 cells. और 8 न्यूक्लिया कैसे हो गए. 8 न्यूक्लिया, 3 of the 3 antipodal cells, 3 of the egg apparatus cells, 6 हो गए, and 2 are present in the central cell. So 7 celled and 8 nucleated female gametophyte or embryo sac is developed from single megaspore, and that is known as what. Monosporic structure. Okay, तो यहाँ पे fertilization होने वाला है. The actual process of fertilization will happen inside the female gametophyte. For that purpose, synergites will help there, and 2 male gametes which we have seen in the male gametophyte, one will fuse with the egg, other will fuse with the central cell. तो वो हम लर्न करने वाले हैं in the next lecture. First of all, we shall learn the story of that development of female gametophyte. Thanks a lot.